हेलो। हाँ गाइस, डियर स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आज हम जो है फॉर्मेशन ऑफ इको और इको के विषय में, इकोसिस्टम विषय में जो है चर्चा करेंगे। नाउ कम टू अंडरस्टैंड अबाउट द इको। व्हाट इज इको? एंड इको इज द रिपीटेशंस of a sounds caused by the reflection of sound waves of a hard surface. इको क्या है? इको रिपीटेशन ऑफ साउंड, साउंड का बार बार रिपीट होना, काज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब साउंड रिफ्लेक्ट होकर होकर के बार बार रिपीट होता है, दैट कॉज ऑफ द साउंड इज नोन एज द वेव ऑफ ए हार्ड सरफेस, इज नोन ऑफ इज द इकोसिस्टम। जब ध्वनि किसी कठोर सतह से टकरा करके पुनः वापस आती है या नंबर ऑफ टाइम्स बार बार रिटर्न होती है, तो इस सिस्टम्स को, इस प्रोसेस को हम इकोसिस्टम या प्रतिध्वनि कहते हैं। इन an echo is the repetition of a sound caused by the reflection of sound waves of a hard surface. It is clear? इको क्या है? इको आवाज का किसी सरफेस से, सपोज कीजिए ये कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है साउंड जो है, ये आ करके जो है किसी हार्ड सरफेस से जो है क्या कर रहा है, टकरा रहा है। फिर इससे टकराने के बाद पुनः ये जो है, जैसे ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ से टकराने के बाद पुनः जो है ये वापस हो रहा है। ये जो है इवेंट्स जो है ये इको कहलाता है। ठीक है, इस तरह से जब साउंड वेव्स एक जो है किसी ठोस सरफेस से टकरा करके जो है ये टकराती हैं और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट होकर के पुनः उसी डायरेक्शन में वापस आती हैं और नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये जो है सुनाई पड़ता है। किसको? ये जो है प्रोड्यूसर्स को नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये सुनाई जब पड़ने लगता है, तो इसको इको कहते हैं। इको प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि का मतलब है जब ध्वनि उत्पादक का जो स्रोत होता है वो जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो ध्वनि जो है ट्रेवल्स करती है, प्रोपोगेट करके किसी जो है ओपेक ऑब्जेक्ट से टकरा करके पुनः वापस जब आती है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द इको। इसको हम इको कहते हैं। टू बी heard distinctly, the time interval between the original sounds and the reflected sound must be at least 0.1 seconds, यानी कि 0.1 seconds, and distance of the reflecting surface must be at 17.2, यानी कि टाइम का ड्यूरेशन, यानी टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? टाइम ड्यूरेशन जो है, टाइम ड्यूरेशन आपका होना चाहिए 0.1 सेकेंड। और डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 17.2 मीटर्स, यानी कि 17.2 मीटर्स जो है डिस्टेंस रहेगा, तभी जो है इको फॉर्म होगा। ये कंडीशंस है, दिस इज द कंडीशंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इकोसिस्टम और इको। तो फॉर्मेशन ऑफ एन इको, some conditions. First conditions, sound waves travel. First conditions, you know that sound waves travels when a sound is produced. जब साउंड को हम प्रोड्यूस करते हैं, it travels outwards in waves. ये आगे जो है वेव्स के रूप में, तरंगों के रूप में जो है ट्रेवल करती है, गमन करती है। और ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, साउंड वेव्स ट्रेवल्स, यानी व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड, जब साउंड उत्पन्न होती है, इट इज ट्रेवल्स आउटवर्ड्स इन वेव्स, ये वेव्स के रूप में, तरंगों के रूप में जो है आगे बढ़ती है। एंड इट ट्रेवल्स आउटवर्ड्स इन वेव्स। Second, reflection of surface. Suppose that when sound will be travels and strike to a hard surface, then that sound will be reflect, यानी कि वो परावर्तित होती है उसी दिशा में जिधर प्रोड्यूसर्स है। और प्रोड्यूसर्स को एक बार वो बार बार टकराती है, तो नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे when we says that hello, then repetition of the hello, 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 number of times. So reflection of sounds, if these sounds waves encounter a hard rigid surface,
like a wall or mountains. लाइक ए वॉल, जैसे दीवार से टकराते हैं अथवा किसी पहाड़ी से यानी माउंटेन से टकराती है. दे बाउंस बैक टुवर्ड्स द सोर्स. सपोज कीजिए कि ये सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ साउंड. फिर जो है इससे ये टकराती है, दिस साउंड्स विल बी स्ट्राइक टू दिस एंड फिर इसके बाउंस बैक हो जाती है. टकराने के बाद दिस साउंड विल बी बाउंस बैक, ये बाउंस बैक हो जाती है. दिस कंडीशन इज नोन एज द echo. Yani ki there are two conditions. I will explain two conditions of the formation of the echo. First is the sound waves travels. When a sound is produced, it travels outwards in waves. Reflection of a surface. यानी कि किसी भी सरफेस से वो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, मीन्स परावर्तित होती है. And encounter a hard rigid surface like a wall or mountains, they bounce back towards the source. बाउंस बैक, टकराने के बाद ये पुनः जो है क्या होती है, इस सोर्स जो है वापस हो जाती है. एंड वेव रिफ्लेक्शन, वेव रिफ्लेक्शन तरंगों का परावर्तन. व्हाट मींस दिस बाउंसिंग बैक इज द फिनोमेना ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. बाउंसिंग बैक, ये बाउंस होकर के पुनः वापस आती है. बाउंसिंग बैक इज द फिनोमेना ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स. एंड नेक्स्ट पॉइंट्स कम बैक टू द इको perception. Echo perceptions, your ears and brains perceives the reflected sounds as and distinct separate sounds. If the time gap between the original and the reflected sound is long enough. Understands? Key conditions of the hearing and echo. What is the key conditions of the hearing to the echo? Now come, understands? फर्स्ट कंडीशन इज द डिस्टेंस. फर्स्ट कंडीशन क्या होता है? डिस्टेंस. डिस्टेंस इसका सर्टेन होना चाहिए. इससे कम या इससे अधिक डिस्टेंस पर इको फॉर्म नहीं होता है. द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द रिफ्लेक्शन सरफेस मस्ट बी ग्रेट इनफ फॉर द साउंड्स ऑफ द ट्रेवल ऑफ द सरफेस एंड बैक टू द लिसनर. लिसनर के पास तक वो बैक होकर के वापस आना चाहिए. फॉर द इको टू बी डिस्टिंक्ट एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव्स मस्ट बी एट 34 मीटर्स. 34 मीटर टोटल ट्रेवल्स, बट हाफ होना चाहिए. टोटल ट्रेवल्स 34 मीटर्स, मीनिंग द सरफेस इज एट लीस्ट, यानी कि सरफेस इज एट लीस्ट 17 मीटर्स, 17 मीटर्स अवे. नेक्स्ट टाइम. Time is must, and the time interval between the hearing and original sound, yani hearing and original sounds and the reflected sounds must be greater than 0.1 second. What? 0.1 second. Hearing time is the 0.1 seconds, and this is because of the human brain needs the much times of the process and original sounds before it can distinguish a new reflected ones. So this is the echo and formation of the echo systems. How a echo form, I will explain this process now today, and when I will come to next lives, then I will briefly explain the ecosystem, propagation of sounds, and some other contents. I will come to you. Okay, now so I am close my lives today, and I will come to few after some times again. Okay, now come. Now come again. And point come difference between echo and reverberation. Students, you know that even sometimes a sound will be reverberate number of times, but when you will be speaks in a big halls, and that sound will be number of time you will listens. Suppose that once times you will be says the hellos, this hello. So this is the reverberation. Now come to the
propagation of sound waves. First, we understand now. We know that vibration created by the body of the object produces by sound. Without vibration, sound cannot be created, cannot be produced. When when sound will be produced, sound will be produces. This is the must condition. Is the must. When vibration will be produced, then sound will be produced. जब तक vibration नहीं होगा, sound produce नहीं होता है. We know that vibration created by the body or object produces sounds. There are different types of the sounds produced depending on the frequency. Different types of the sounds will be produced by the, it is depending on the frequency, and sound is a mechanical waves and travel from the one location to another. Sound क्या है? Sound एक mechanical waves है जो travel करती है one from one locations to another. Sound traveling through in the form of waves with the help of the particles. Students, you know that sound, some conditions to traveling of the sounds. Without medium, sounds never be travels one to another place, because media presents in the environment tiny particle of dust presents in the atmospheres. And when we will be said or told or any ask some things, the our sounds will be produced by the vibrations, and these vibrations strike from the tiny particles of the which is present in the air or atmospheres, and these tiny particles will be travels to my ears, and that it is the possible to the sound will be hears or listening. तो नेक्स्ट पॉइंट्स आता है, द वेव्स इज सेड टू बी अंडरगो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शंस or diffractions while moving. During and transmission, it also undergoes changing in the properties of behavior of sounds. And echo is the created when a sound wave is reflected off a distant surface. Let us know more about the echo and also the difference between the echo and reverberation. And first, now come what is the how a sound will be propagation of sound waves. So students, now come propagation of sound is dependent on the medium through which it travels. The velocity of sound waves and movings through the air can be reduced by high winds speed that dissipate the energy of the sound waves. Sound waves features particles of the medium through which it travels, and speed of the sound waves is affected by the temperatures. This viscosity of the mediums determines the rate at sound which is the attained. And next, echo and reverberation. Now come and understand what is the echo and reverberation. What is the echo and reverberation? आइए देखते हैं इको और रिवर्बरेशन क्या है. इको एंड रिवर्बरेशन. इको, sound and the echo seem to be similar concepts. Sound and echo to be similar concepts, but they are not. They are different phenomena of the sound. When the sound is repeated, when the sound waves is reflected, it is known as the echo. When the sound is repeated and when the sound wave is reflected, it is known as the echo. Echo is heard when space is large. Echo तभी हम सुन सकते हैं when space is large. But next, for example, imagine standing in an empty room and shouting hi. You can hear hi. Repeated sounds is the fading patterns. This phenomena is known as an echo. And sound of the voice goes out into the rooms, bouncing against walls until the returning our ears. The longer it takes the sound of the return, the more distinguished it will be. And when reflected of the sounds due to multiple of the sources happens within the enclosed systems of when a sound wave is reflected of a nearby surface, reverberation happens. Reverberation is the reflected of sound waves created by the superposition of such echoes. Let us know that the difference between the echo and reverberation. What is the differences between the echo and reverberation? Now come and understands echo. First, echo.
Echo, it is the reflection of and sound waves of a surface. Echo is the reflection of the sound waves to a surface. When sound waves traverse and strike to any mountains or walls, then this sound will be bounced back to the listener. So it is known as the echo and reverberation. It is created by the reflection of sound waves and created by the superposition of the echoes. Superposition of the echoes. And echo, it is clear and distinguishable. Echo is the clear and distinguishable, and reverberation, it is less clear and comparatively less clear, it is a and comparatively. So next point, echo, when distance between the source and the reflecting body exceeds 50 feet and echo is heard. 50 feet and echo is heard when the distance and reverberation, when the distance between the source and the reflecting body is reality small, reverberation can be heard. यानी कि डिस्टेंस कम होगा या डिस्टेंस छोटा होगा तभी जो है रिवर्बरेशन हमको सुनाई पड़ेगा. नेक्स्ट, इको इज फॉर्म्ड इन ए बोथ ओपन एंड क्लोज सरफेस. इको इज फॉर्म, इको जो है ओपन और क्लोज सरफेस दोनों पर फॉर्म होता है, बट रिवर्बरेशन अकर्स इन द क्लोज स्पेस विद द मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. एंड नेक्स्ट, echo can be used to the calculated distance of the object, but reverberation, the distance of reflecting objects cannot be determined by the reverberations since the travel time is too small. Travel time is too small. And next, echo, the minimum distance of the reflecting object is 17.2 meters, and reverberation, no specified minimum distance. So this is the differences between the echo and reverberation. So students, now I will come to next lecture and live. Then now today I will end my lives. Okay.